Hi everyone, welcome back to another wonderful video on Women is Special. So today I'm going to ask you 9 questions which will change your life whenever you're going through a problem. But before going to that, if anybody who is newly just joined with me, I highly recommend please watch the previous video, because in the previous video we have discussed that how we are going to, you know, respond in a situation or react in a situation. So, are we a person who reacts to a situation, or are we a person who responds to a situation? So, once you watch that, then you can start watching this video. Kind of, you can say that it's a sequel to the previous video. So, yes, before I start, please नोटबुक एंड पेन लेकर आइए, लेके बैठिए और ये 9 सवाल जरूर लिखिए, बिकॉज यू नो दीज आर द 9 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैड टाइम इन योर लाइफ. ओके, सो आई होप आप सब अब तक कॉपी और पेन लेकर आ चुके होंगे. नहीं तो आप मोबाइल में लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल है. बट आई हाईली 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 वांट यू टू राइट डाउन. So let's start today's video. So thing is, first of all, I will ask you to stop asking yourself why me questions. You know, जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले हम यही पूछते हैं why me, मेरे साथ क्यों हो रहा है, why God, you know, why me, हे भगवान फिर से मेरे साथ, why me, हर बार मैं ही क्यों. So ये जो why me है, stop asking these questions immediately. Ask the questions how can I. So now stop asking why me, replace it with how can I. Okay, so this is the first formula or mantra you can say. Now I'll share you the 9 questions. So very first one question is you should be asking is that what is a difficult or troubling situation in my life or in your life. So what is a difficult or troubling situation in your life? Second question is how are you creating it or allowing it to happen. Okay, how you are creating it or allowing it to happen. Third question is what are you pretending not to know. What are you pretending not to know. Fourth question is what is benefit of keeping things as they are. Okay, so what is the benefit of keeping the things as they are. Fifth question is what is the cost of not changing the situation. What is the cost of not changing the situation. Sixth question is what would you rather be experiencing. What would you be rather experiencing. Okay, and then seventh question is what actions will you take to create that. What actions will you take to create that. Eighth question is by when will you take the action. By when you will take the action. And the last question, the 9th question is on a scale of 1 to 10, how likely are you to follow through on this action. Okay, on the scale of 1 to 10, how likely are you to follow through on this action. So these are the 9 questions. Now I will explain you these 9 questions, so don't worry. I know 9 questions बता देने से कुछ नहीं होगा. I have to give you example. So please understand this with an example. So let's say the first question is what is a difficult or trouble situation in your life. So let's say I can give you example that the trouble situation in my life right now is, example, I am a 7 kilo overweight. Maybe somebody is having a weight issue, so I'm just considering that generally. That the problem right now is that I am 7 kilos of overweight. Now this is the problem. Now the second question we need to relate to this is we need to ask is that how are you creating it or allowing it to happen. Okay, how are you creating it or allowing it to happen. So now the question we will be asking is that I make excuses. Might be I make excuses and avoid exercising, and I'm not controlling my might be sugar intake.
सो मे बी नेक्स्ट न्यूज बना रही हूँ कि यार मुझे पता है कि मेरा 7 किलो वेट जो है बढ़ा हुआ है, लेकिन इसको घटाने के लिए मैं बहाने बना रही हूँ, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ, शुगर भी कट नहीं कर सकती हूँ, मैदा भी कट नहीं कर सकती हूँ, जो मेनली हम लोगों के वेट में आता है. सो माइट बी दीज आर दी थिंग्स विच आई एम नॉट टेकिंग, okay, and I'm creating it unintentionally. Third question comes where we are relating to this problem is that what are you pretending not to know? कि ऐसा क्या है जो आपको पता तो है लेकिन आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको नहीं मालूम है. सो इस सिचुएशन में इट विल बी लाइक दैट इफ आई कंटिन्यू, okay, if I continue this way, the 7 kilograms continue this way, it means where I'm not doing exercise, I'm eating sugar every day, like expected is more than expected, I'm eating, might be eating chocolates, eating cakes, whatever, so I'm not taking the right action considering. So this is something, obviously if I am doing this, it will be adding in my 7 kilos. So this is not what thing I know, but I'm pretending that I don't know, and finally the 7 kilo will come to 10, 15 or 20 and so on. So this is what which I am pretending not to know. Now the fourth question to relate this problem is that what is the benefit of keeping things as that, कि अगर मैं कुछ बदलती नहीं हूँ तो उससे बेनिफिट क्या होने वाला है. सो मे बी अगर मैं अपनी शुगर इनटेक कम नहीं करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करने नहीं जाती हूँ और ऐसे के ऐसे ही चलता रहता है, तो बेनिफिट क्या मिलेगा. इसका कोई बेनिफिट तो नहीं होगा, बट क्या होगा, मैं और लेजी हो जाऊंगी एंड मे बी और स्वीट्स खाने की मेरी इच्छा बढ़ती रहेगी. या जो मैं स्वीट्स खा रही हूँ उसे मैं कम तो कर नहीं रही हूँ, और हम सब चाहते हैं मीठा खाने के बाद हमें नींद तो बहुत आती है. सो हम लोग लेजी जरूर हो जाएंगे. उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है कि इसका कॉस्ट मुझे क्या है देना पड़ेगा अगर मैं सिचुएशन नहीं बदलूंगी. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नॉट चेंजिंग दिस सिचुएशन. सो इट विल बी, what will happen, my health will deteriorate, it will impact my health, and might be because I became overweight, I became 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, so I somewhere might lose my confidence, because might be my dresses will not fit me, might be I'm not able to wear the favorite dress, or maybe मैं mall में गई and I think that size M will come but size L भी नहीं XL आ रहा है. So somewhere I feel little bit low in confidence and I am like, oh god, मैं इतनी मोटी होगी. So this thing can happen to anyone. So this is the price you will be paying if you're not changing the situation. And now what would you rather be experiencing? अगर आप ये सब चीजों को बदलते हैं, शुगर इंटेक कम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं? एक हेल्दी बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं. सो व्हाट वुड यू रादर बी एक्सपीरियंसिंग? आंसर इज अ हेल्दी बॉडी. अब what actions will you take to create that? अब आपको पता है कि अगर आप ये चीजें हटाते हो तो एक हेल्दी बॉडी मिलती है, तो अब हेल्दी बॉडी पाने के लिए आप क्या एक्शंस लेंगे. सो आपको अब एक्शंस जॉट डाउन करने हैं which you feel that you can take to get to your resulted or the targeted one problem. कि ये रिजल्ट है, मुझे पतले होना है, या लेट्स से मुझे आई एम एक्सेस 7 किलो, तो आई नीड टू बी फर्स्टली ऑन दी ब्रेक इवन पॉइंट कि चलो मैं 60 हूँ और मुझे 55 पे जाना है. तो आप एक टारगेट लेंगे कि हाँ आपको वहां तक पहुंचना है. सो दैट विल बी एक्शंस कि आप क्या लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, डाइट में कंट्रोल करेंगे, शुगर इनटेक कम करेंगे, दैट कैन बी योर एक्शंस. एंड मे बी जिम ज्वाइन करेंगे, एंड देन बाय व्हेन यू विल टेक दैट एक्शन. देखो एक लिस्ट बना ली कि मुझे ये करना है, ये अचीव करने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उन एक्शंस के आगे हम कोई टाइमलाइन ही नहीं रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हम लोग उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, पता नहीं साल भर हम उसको करते ही रहेंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टाइमलाइन विद योर एक्शन. So now what you need to do is you need to give a timeline to each action कि ये मुझे कब तक अचीव करना है. जिम जाना है तो मेंबरशिप भरनी है तो कब भरनी है. अगर शुगर इनटेक जो है वो मुझे कम करनी है तो आज से करनी है, कल से करनी है, या अभी दिवाली की अभी शॉपिंग करी थी तो उसके बाद करनी है, या न्यू ईयर आने वाला है उसके बाद करनी है. यू नीड टू बी वेरी मच अलाइन्ड कि आपको ये एक्शन जो है कब लेना है. And maybe you want to take an action tomorrow, or maybe you target a date let okay 1st January से मुझे करना है, नए साल से करना है, whatever you feel comfortable. And अब आपको on a scale of 1 and 10 you need to rate it that are you following to
डू दिस एक्शंस एंड हाउ लाइकली आर यू गोइंग टू डू दिस एक्शन। मतलब आपने लिस्ट तो बना ली कि मुझे ये 10 चीजें करनी है, लेकिन ये 10 चीजें आप करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। मतलब जैसे आपने बोला मुझे जिम को जाना है, लेकिन जिम जाने के लिए मुझे अकेले नहीं जाना है, कोई पार्टनर है क्या, या मुझे दूर नहीं जाना है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सो यू नीड टू रेट इट दैट ईच एक्शन विच यू हैव लिस्टेड, हाउ लाइकली आर यू गोइंग टू डू इट। एंड यू नो उसके बाद मे बी यू कैन स्कोर इट कि जैसे आपका है कि आप मोस्ट लाइकली 6 पर हैं या 7 पर है, देन यू नो समवेयर दैट यू नो हाउ इंटरेस्टेड यू आर टू डू दिस। सो आई थिंक अभी आप ये जो प्रॉब्लम है उसे फाइंड कीजिए, उसका एक्शन प्लान बनाइए, उसको रेट कीजिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि आप इसको किस तरह से यू नो अचीव कर सकते हैं, या किस तरह से आपका माइंडसेट जो है इसके ऊपर हमें लाना है। But believe me, by next week, if you are able to list down all the action plan and these 9 questions to your problem, I think great job done. So thank you so much. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.